हेलो नीट एस्पिरेंट। मैं हूं मोहम्मद नूरुल अली, एमबीबीएस स्टूडेंट ऑफ असम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल डिब्रूगढ़। आप सबका स्वागत करता हूं हमारे नीट टेस्ट सेशन के आज के वीडियो सॉल्यूशंस में। हमारे नीट टेस्ट सीरीज के हर एक सेशन में आपको 30 चुने हुए क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि नीट के लिए हाईली प्रोबेबल है। और इस वीडियो सॉल्यूशंस में हम आपको क्वेश्चन आंसर के साथ साथ उससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड ऑप्शंस को भी क्विकली एक्सप्लेन करेंगे, ताकि आपको हाईली प्रोबेबल क्वेश्चन के साथ साथ उस टॉपिक का भी एक क्विक रिवीजन हो जाए। हैप्पी लर्निंग। हाय, टुडे विल बी डिस्कसिंग द क्वेश्चंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि अमंग द फॉलोइंग विच कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हैज द लीस्ट फेलियर रेट। तो जो नेचुरल मेथड्स होते हैं जैसे कि कॉइटस इंटरप्टस, लैक्टेशन एंड एमेनोरिया या फिर पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, इसमें बहुत सबसे ज़्यादा फेलियर रेट होता है। बैरियर मेथड्स जैसे हो गया कि कॉन्डम या फिर फेमिडोम जो भी होता है, मतलब मेल कॉन्डम एंड द फीमेल कॉन्डम दैट इज फेमिडोम, उसमें भी मतलब द फेलियर रेट इज़ हाई क्योंकि देयर कैन बी ब्रेकेज इन द कॉन्डम एंड ऑल। एंड द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, या देयर कैन ऑल्सो बी, ये भी काम करते हैं, बट ऐसा हो सकता है कि समटाइम्स यू माइट फॉरगेट टू टेक द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो तब जाके यू माइट, इफ यू इंडल्ज योरसेल्फ इन क्वार्टर्स, देन यू माइट गेट द अल्टीमेटम, राइट। तो लेकिन जो इम्प्लांट्स है उसमें क्या होगा कि इफ़ यू इम्प्लांट 6 स्ट्रिप्स देन इट गोज अप टू फ्यू ईयर्स, लाइक कुछ है कि 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 6 ईयर्स, अप टू 10 ईयर्स तक भी हो सकता है। तो उसमें बहुत ज़्यादा मतलब रेट बहुत कम हो जाता है टू ऑफ फेलियर। तो बेस्ट इज टू गो फॉर सर्जिकल रिमूवल या फिर वो वेसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी, बट अदर देन दैट कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट्स आर द बेस्ट। जैसे कि आईयूडी भी हो सकता है, इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ इम्प्लांट। Human papillomavirus is responsible for causing what? H. Human papillomavirus is responsible for causing genital warts. Option B is correct. Syphilis is caused by Treponema pallidum. I'll just say the name. So genital herpes is caused by herpes simplex virus, and cancroid is caused by uh, Haemophilus cancri. Okay. HIV infection can be confirmed by which test? So confirmation of HIV can be done by what? HIV आप वो देखोगे ना, उसमें DNA कंटेंट देखोगे, तो by southern blotting, confirmatory test। प्रिलिमिनरी टेस्ट की देख सकते हो आप भाई एलिसा से, प्रिलिमिनरी टेस्ट देख सकते हो कि अगर है कि नहीं, अगर बहुत, लेकिन सदर्न ब्लॉटिंग करोगे तो आपको एकदम शॉर्ट पता चल जाएगा कि हाँ HIV है। बट अगर साउदर्न ब्लॉटिंग नहीं होता ऑप्शन में तो हम लोग एलिसा देते हैं। टर्शियरी स्टेज ऑफ सिफिलिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय व्हाट? क्या होगा? ये थोड़ा एक्स्ट्रा है बट यू शुड नो। एब्सेंस इन सिम्टम्स एज इट इज सिम्टमलेस स्टेज, नहीं। टर्शियरी स्टेज इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस स्टेजेस ऑफ एनी काइंड ऑफ डिजीज। रैशेस एंड फीवर, ये तो लेटर ऑन होगा। हार्ट पेनलेस कैंकर्स ऑन जेनिटल व्हिच स्प्रेड द बैक्टीरिया, या नहीं, ये भी नहीं होगा। ये तो मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी स्टेजेस का पार्ट है। एंड ऑर्गन डिग्रेडेशन एंड न्यूरोसिफिलिस, यस दिस इज करेक्ट। ऑर्गन डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा, नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो जाएगा इन द ऑर्गन्स, स्पेशली इन द आउटर रीजन ऑफ द प्यूबिक एरिया, योर तो वहाँ पे होने लगता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, सिफिलिस का। Methods that offer the dual benefit of protection against STD transmission and achievement of contraception is what? That is condom. वो dual protection करता है against transmission of STDs and achievement of contraception. Year of initiation of family planning program and legalization of MTP in India are respectively what? फैमिली प्लानिंग कब स्टार्ट हुआ था? RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड टू इम्प्लांट ऑल दिस programs. It was in 1951, and MTP, medical termination of pregnancy, was legalized in 1971. ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। देख लो एक बार, 1951 and 1971. All of the following are birth control method except what? Use of progestastat, हाँ वो implant है या फिर injection है जो use for birth control. ART is assisted reproductive technologies. This is not a birth control, but birth कराने के लिए assisted reproductive technologies use करते हैं। जैसे कि कोई भी female या फिर कोई भी couple, they are not able to conceive a child,
In that case we use ARTs. Different types of ARTs are there. GIFT हो गया, ZIFT हो गया, ICSI हो गया, and AI हो गया, मतलब artificial insemination, and intrauterine transfer, IUT, all these things are there. Tubectomy, it is a it's a birth control, and use of progesterone pills, it is also birth control. So option B is correct for this. Okay. Choose the incorrect pair. Norplant, implantable for progesterone, correct. Lips loop, prevent implantation and ovulation. Lips loop ovulation तो stop नहीं करता है, but implantation stop कर देता है, fertilization block कर देता है. It is non-medicated IUD. Vasectomy, terminal method of blood control for males, correct. Walls, barrier method of birth control. So A, C, and D are correct. B is not correct. So option will be B. Ovulation stop नहीं करता. Ovulation can be stopped only by what? Hormonal होना पड़ेगा. Lips loop is not hormonal, it is non-medicated. So if prevents implantation नहीं करता. Infection that can be transmitted by sexual contact are what? AIDS and cancer. कैंसर तो सेक्सुअली ट्रांसमिट नहीं होगा, एड्स होगा. एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम होता है उसका फुल फॉर्म. मलेरिया एंड सिरोसिस, नो, वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से नहीं जाएगा. कैंसर एंड डेंगू, नो, वो भी नहीं जाएगा. हेपेटाइटिस बी एंड HIV, यस, बोथ ऑफ दिस विल ट्रांसफर थ्रू what? Sexually contact. Choose the incorrect statement. MTP is performed to get rid of unwanted pregnancies. Yes, this is correct. मान लो कि अगर कॉन्ट्रासेप्शन फेल हो गया तब जाकर प्रेगनेंसी होगा, या फिर यू नो दैट यू डोंट वांट अ चाइल्ड, यू डोंट वांट टू प्लान फॉर अ चाइल्ड नाउ एंड इट वाज एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी, देन वी कैन यूज MTP. या फिर ऐसे भी हो सकता है कि इफ़ यू नो दैट द चाइल्ड दैट विल बी बॉर्न विल हैव अ लॉट ऑफ डिजीजेस, देन वी कैन ऑल्सो गो फॉर MTP. Vasectomy and tubectomy are reversible? No. This is wrong. Vasectomy and tubectomy are not reversible. वो मतलब उसका reversibility बहुत poor है. अभी modern day में there is a possibility of reversibility, but we will stick to NCERT, and NCERT says that there is no reversibility, is very poor. Okay. Tubectomy is done in females. Yes, this is absolutely correct. And vasectomy is done in males. This is also absolutely correct. So option B is correct for this. Okay. In lactation amenorrhea, there is no menstruation, no ovulation due to high level of what? Lactational amenorrhea, there is no menstruation, no ovulation due to high level of prolactin. बहुत लोग इसको confuse कर देते हैं with high level of progesterone, which is very very wrong. क्योंकि progesterone तो high रहता है, okay, in normal cases में भी जब menstruation होता है, not as high as when you're pregnant, but थोड़ा तो high रहता है, but ऐसा कुछ changes नहीं देखने को मिलता. लेकिन prolactin जो होता है वो एक negative feedback loop देता है, and it stops the secretion of GnRH from the anterior pituitary of the anterior part of the pituitary, and वो GnRH secreted नहीं होता है, तो FSH and LH secretion stops, which in turn stops the secretion of estrogen and progesterone. So the correct option is C, prolactin. Viral disease among the following is what? Viral disease among the following is syphilis is bacterial disease. Treponema pallidum is causes syphilis. Hepatitis B is caused by hepatitis B virus, so this is a viral disease. Gonorrhea is caused by Neisseria gonorrhoeae, which is a bacteria again, and chlamydia is caused by a protozoa. I forgot the name of the protozoa, but it's caused by protozoa. Okay, I think it was Toxoplasma chlamydiasis. I have Trypanosoma chlamydiasis. I'm not sure about it. Just check it once. But the option here is B is correct, because hepatitis B causes viral disease. HIV destroys what? तो HIV जो होता है, HIV के ऊपर कुछ HIV है, यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स होते हैं, इसको GP120 प्रोटीन होते हैं. These proteins have the receptors, specific receptors, इसको CD4 receptors कहते हैं. And ये CD4 ये इसमें जाके जब बाइंड होगा तो इसको रिकॉग्नाइज करेगा, इसको अंदर एंटर हो जाएगा. तो वो जो स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं, CD4 receptors, are present only in the helper T cells of our immune system. So option A is correct. Okay. All correct for amniocentesis except it used to determine sex of the fetus. It is, but directly हम लोग उसका आंसर नहीं दे सकते हैं. It can reveal genetic diseases, yes. It can reveal physiological diseases, no. It can be done by the removal of amniotic fluid. Yes, हम लोग जो amniotic fluid लेते हैं जो कि इंजेक्शन की मदद से, तो वी कैन सी कि वहाँ पे कुछ सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं. वी टेक आउट द सेल फ्रेगमेंट्स, उससे DNA एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसका इडियोग्राम बनाते हैं, वी सी कि क्या क्या है.
कौन सा जेनेटिक एबनॉर्मलिटी हो सकता है, या फिर क्रोमोसोमल एबरेशन है, या फिर व्हाट इज द सेक्स ऑफ द बेबी, यू कैन आल्सो सी दैट. बट फिजियोलॉजिकल डिफेक्ट, मान लो कि उसका पेट खराब रहेगा या फिर उसका मतलब लीवर में प्रॉब्लम होगा, वी कैन नॉट से दैट अगर जेनेटिक बेसिस नहीं है तो. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस. दिस इज incorrect, right? Which of the following is the incorrect match with respect to ART, artificial reproductive technologies? मतलब कौन सा इनकरेक्ट है, मतलब कौन सा करेक्ट नहीं है. तीन करेक्ट निकाल देंगे तो एक खुद ब खुद वो इनकरेक्ट निकल जाएगा. Zygote or early embryo up to 8 blastomeres is transferred into the fallopian tube. Yes, this is correct. This is a direct line of NCERT. Okay. IUT. Embryo with more than 8 blastomeres is transferred into the uterus. Yes, this is correct. C. GIFT. Transfer of an ovum after fertilization into the fallopian tube of another female who cannot produce her own ova. This is wrong. GIFT is transfer of ovum before fertilization. मतलब ovum transfer कर रहे हो आप in the gamete interfallopian transfer. तो अगर वो after fertilization कर रहे हो तो वो तो zift हो गया ना, zygote interfallopian transfer. तो फिर option C is correct. ICSI भी देख लेते हैं. ICSI a specialized procedure to form an embryo in the laboratory in which the sperm is injected into the ovum. Yes, डायरेक्टली स्पर्म को लेके उसके ओवम में इंजेक्ट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोनीडल्स. दिस इज अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस एंड इसका मतलब इतना आजकल तो हो रहा है, लेकिन इट इज़ नॉट वेरी वायबल ऑल्सो कि एवरीबडी कैन अफोर्ड दिस. बट अदर जो होता है ज़ाइगोट इंटरफेलोपियन ट्रांसफर या फिर GIFT, इट इज़ क्वाइट अफोर्डेबल. इन आर्ट which involves in vitro fertilization is, in vitro fertilization किस में होता है, मतलब बाहर होता है. That will be what? ICSI. Now, just now I explained. Infertility due to anovulation or oligoovulation can be corrected with using which of the following ARTs? मतलब आप इनफर्टिलिटी हो रहा है आप लोगों का, मतलब इज दैट द कपल इज नॉट एबल टू कंसीव अ चाइल्ड ड्यू टू एन ओव्यूलेशन, मतलब ओव्यूलेशन ही नहीं हो रहा है, या फिर ऑलिगो ओव्यूलेशन मतलब बहुत कम होता है, एंड द क्वालिटी ऑफ द ओवम्स नॉट दैट ग्रेट. बट जो फीमेल है, दैट फीमेल कैन प्रोवाइड एप्ट एनवायरनमेंट फॉर द ज़ाइगोट टू डेवलप, राइट. तो उसमें क्या होगा कि आप एक गैमेट दे दो उसको, ताकि वो अपने आप ही वहाँ पे अगर ड्यूरिंग क्वार्टर्स वो फर्टिलाइज करा के उसको इम्प्लांट कर पाए यूटेरस में, राइट. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. Where was Saheli developed? Saheli is a non-steroidal contraceptive pill, once a week pill बोलते हैं. तो उसमें एक एक्टिव कंपाउंड रहता है, इसको सेंट्रोकोमन कहते हैं. It acts by blocking the estrogen receptors present on the endometrial lining of the uterus, ताकि uterine thickening ना हो. So ये इसका mechanism of action हो गया. It was developed by Central Drug Research Institute, which is situated in Lucknow. शॉर्ट फॉर्म में CDRI लखनऊ कहते हैं. ओके, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. A specialized embryo forming procedure in which sperm is directly injected into the ovum is what? फिर से वही सवाल, एक सी. ये ओवम है, ये स्पर्म है, इसको डायरेक्टली इंजेक्ट कर देंगे इसके अंदर. ओके. A copper releasing IUD of the following is what? Copper releasing is multilode 375, CUT, CU7. Progestasert is a hormonal method. Lip slope is non-medicated. LNG2 is also like hormone releasing. So option C is correct. After successful in vitro fertilization, the fertilized egg begins to divide. Where is this egg transferred after it reaches the 8 cell stage, and what is the technique called? अगर pre-8 हुआ, pre-8 में इट इज नोन एज ZIFT, एंड इसको हम लोग फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे. अगर post-8 हुआ तो उसको हम लोग क्या क्या कहते हैं? इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, एंड इसको हम लोग यूटेरस में ट्रांसफर करते हैं. सो दैट इज ऑप्शन नंबर डी, यूटेरस एंड IUT, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर. Choose the odd one with respect to methods of contraception. ठीक है, देखते हैं क्या क्या odd है. Coitus interruptus, lactational amenorrhea, withdrawal method, and condoms and diaphragms. तो coitus interruptus is natural method, मतलब उसमें interrupt before ejaculation, the
coitus is interrupted, right? You take out the penis from the vagina. In that case, ejaculation inside the female नहीं होता है, then the chances of pregnancy is it is reduced. Lactation amenorrhea, that is during the period of lactation by the female after postpartum lactational, so the chances is of pregnancy is very high due to the high level of prolactin in the blood, which sends a negative feedback loop to the anterior part of the pituitary, which decreases the secretion of GnRH, thus in turn reducing the synthesis of FSH and LH, ताकि estrogen and progesterone ना बढ़े. Oh, that is very long and complex. Withdrawal syndrome is similar. That is मतलब coitus interruptus का ही अलग नाम है. And condoms and diaphragms. तो ये सारे जो है, all these things are natural methods of contraception. जैसे कि coitus interruptus हो गया, withdrawal method हो गया, okay, मतलब lactation amenorrhea, and also periodic abstinence. Again, condoms and diaphragms are barrier methods. You're using an artificial thing. जैसे कि condoms में latex से बना, diaphragm जो latex से बना होता है, उसको मतलब it blocks this pathway of sperm. So option D is correct. Okay. A lady is diagnosed with both fallopian tubes blocked. Which art will be best suitable for the patient? उसका fallopian tube blocked है, right? बट हम लोगों को कुछ नहीं कहा गया कि उसका ओवरी खराब है या फिर यूटेरस खराब है, सिर्फ fallopian tube blocked है. तो उसमें क्या करेंगे हम लोग? उसके ओवरी से एक, in that case we will take out that person's gametes from that ovary, ova निकाल लेंगे and उसको sperms के साथ IVF कर देंगे. So option C is correct. RCH stands for what? It was legalized, well, it was not legalized, it was introduced in 1951, and it is known as reproductive and child health care. Reproductive and natural method of contraception work by what? Prevention of fertilization. Fertilization होने नहीं देगा, sperm और ovum को सामने सामने आने नहीं देगा, तब जाके fertilization नहीं होगा ना. Option C is correct. Ideal contraceptive for delayed pregnancy is what? Ideal contraceptive क्या है? सबसे widely used contraceptive is IUD, intrauterine devices, which delays the pregnancy. आप जितना भी time pregnancy को delay करना चाहते हो, that you can do. So option B is correct. Emergency contraception must be taken within what? Emergency contraception must be taken within 72 hours of the act. या फिर किसी भी तरीके से मतलब मानो कि you don't want to have you cannot afford to have a pregnancy at this moment, और किसी के साथ घिनौनी हरकत हो जाए, जैसे कि रेप हो जाए, या फिर कोई मतलब unknowingly, या फिर there might be a breakage in the, you suspect a breakage in the contraception, या फिर some wrongdoing. So in that case, contraception must be taken 72 hours. मतलब 3 दिन के अंदर अंदर you have to take the pill that is known as contraceptive pills होते हैं, जैसे कि most widely available is I-pill in the market. So if you take that, then the chances of contraception is chances मतलब वो almost खत्म ही हो जाता है. So option B is correct. It is 72 hours of coitus. Art means what? It is assisted reproductive technologies. Art. It's very common. Contraceptive pills work by what? Contraceptive pills जो होता है वो ज़्यादातर जो होते हैं, जैसे कि हम लोग अगर पोस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले, मतलब पोस्ट कॉइटस पिल्स लेंगे, तो दैट विल प्रिवेंट इम्प्लांटेशन और विल मेक द यूटेरस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन. लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है इस प्री कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ही लेते रहते हैं लोग. ओके, सो दैट प्रिवेंट्स ओव्यूलेशन, जैसे कि सहेली हो गया, राइट, या फिर माला डी हो गया, माला एन हो गया. Select the statement that relate to reproductive health. Healthy reproductive organs with normal functions. Emotional aspect of the reproduction. Yes, मतलब अगर आपका reproductive system healthy है, then you will be, it will work better and you will also be very happy. In that case, emotional aspects of reproduction का भी if you want, मानो कि एक family है which is trying to conceive a child, उसको नेक्स्ट जनरेशन चाहिए. सो इन दैट केस वो एक इमोशनल एस्पेक्ट होता है. एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, जैसे कि गिविंग बर्थ इज अ सोशल थिंग, राइट, पूरा फैमिली इन्वॉल्व हो जाता है, पीपल नेबर्स इन्वॉल्व हो जाता है. सो ऑल दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑल्सो. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. ऑल ऑफ दिस आर इंपॉर्टेंट.
सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस. तो इसमें एक छोटा चैप्टर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली उठ कर जाते हैं फ्रॉम द एनसीईआरटी. I have showed you most of the important things, and we will also see in the coming forward of the chapter. And good luck.